Hello guys. So today we are going to solve the released practice paper of CBSE class 10 science. So let's start. Section A इसमें MCQs है. So let's start question number 1. The yellow color of turmeric changes to red on addition of soap solution. When substance P is added to turmeric, there is no change in color. So which of the following is definitely true about substance P? तो जैसे हमें पता है कि सोप सोल्यूशन बेस है और टर्मरिक बेस के साथ मिलकर रेड कलर हो जाता है, तो दैट विच डेफिनेटली ट्रू इज ऑप्शन सी, पी इज नॉट अ बेस. Question number 2. During the electrolytic refining of copper, what happens in anode? We know that anode is positive terminal, so the answer is option D. Neutral copper atoms lose electrons to become ions. Question number 3. Identify the endothermic reactions among the following. So the answer is option D, P and S. Question number 4. Ashok has written the following reaction to show how metals can be obtained from their ores. Identify the incorrect reaction among them. So the incorrect reaction is option B, only Q. The following reactions are carried out in open vessels. Which of the following correctly shows if the weight of the reaction vessel and content increases, decreases, or remains the same after the reaction is compared to before the reaction? So जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट रिएक्शन में ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जो वेसल में उसमें जो उसका वेट होगा वो इंक्रीज होगा. सेकेंड रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें उनका वेट सेम रहेगा. और थर्ड रिएक्शन में डीकम्पोजिशन हो रहा है तो इसलिए उनका वेट डिक्रीज होगा क्योंकि SO2 एंड SO3 दोनों गैसेस है तो वो दे विल ब्लो अवे. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी option D. Question number 6. The solution of a base with pH 12.1 is given. What can be done to decrease its pH? P. Add distilled water to it. Q. Add a solution of a different base with pH 8.7. Add few drops of an acid with an unknown pH. So the answer will be option D. Any of P, Q and R. क्योंकि जब हम वाटर डालेंगे तो उसका pH डिक्रीज होगा क्योंकि OH माइनस आयॉन्स की कंसनट्रेशन डिक्रीज होगी. अगर हम सोल्यूशन डिफरेंट बेस ऑफ pH 8.7 डालेंगे तो भी उसकी pH डिक्रीज होगी और जब हम एसिड डालेंगे तो भी उसकी pH डिक्रीज होगी. तो द आंसर विल बी ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 7. 1 mole of the following of the carbon compounds require 2 moles of hydrogen to form a saturated hydrocarbon by catalytic hydrogenation. So the answer is option D, P, Q and S. Question number 8. Look at the diagram below carefully. Identify the process taking place in Z. The plant से H2 निकल रहा है so it's option B, transpiration. Question number 9. Lime water turns cloudy in the presence of a gas which is a byproduct of respiration. We know that is carbon dioxide. Shown below are four setup kept in sunlight for 24 hours. Set P and set Q both are in glass tank. सारे सेटअप्स में लाइम वाटर रखा गया है और पॉट्स रखे गए. सेटअप पी और सेटअप एस पे प्लांट नहीं है तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेटअप आर, ऑप्शन सी. क्योंकि उसमें प्लांट भी है और इट्स कोटेड ब्लैक पेंट तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा. क्वेश्चन नंबर 10. A homozygous dominant guinea pig with black fur is crossed with a homozygous guinea pig with white fur. The F1 generation is crossed with itself.
What percentage of F2 generation expected to show white fur coat? So as we know that white fur coat is a recessive trait. So ये in percentage in ratio 3/1 में दिखेगा, तो उसका percentage 25% होगा. So option A is the correct answer. Person X suffers from a condition that affects the normal functioning of pituitary gland. Which of the following is most likely to have a direct effect of person X condition? So the answer is option C, insufficient growth of the body. Because pituitary gland releases growth hormones, so it is necessary for the growth of the body. And if pituitary gland is not normally functioning, then it will affect the growth. The time duration from the sowing of seeds to the harvest of crop is critical for agricultural purposes. Based on the information above, select a reason why farmers prefer vegetative propagation for growing crops. Option A, seedless crops can be produced. Option B, offspring plants genetically similar to parent plant. Option C, plants grown vegetative propagation bear fruits earlier. Vegetative propagation does not depend on external agent of pollination is option D. So ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है, बट इस स्टेटमेंट से रिगार्डिंग जो करेक्ट है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि ये टाइम भी सेव करता है, क्योंकि इसमें जो फ्रूट्स और फ्लावर्स से दोनों जल्दी बियर करता है. Question number 13. The circuit below consists of a variable resistor connected in series with two 2000 ohms resistor. The variable resistor can be adjusted to any value between 0 to 4000 ohm. As the resistance of the variable resistor is changed, which is the smallest possible reading on the voltmeter? तो ये क्वेश्चन ना ट्रिकी है. तो उसमें जो वेरिएबल रेजिस्टर होता है उसमें हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं. तो जैसा गिवन है, ये जो सर्किट का जो वोल्ट है वो है 12 वोल्ट, और इसका जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, अगर हम इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को 4 ओम करते हैं, इसका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 8000 ओम्स. हमें पता है V इज इक्वल टू IR. So I is equal to B upon R, that is 12 upon 8000 ampere. So 3 upon 2000 ampere. जैसे पता है कि वोल्ट मीटर 2000 ओम के रजिस्टर पर लगाए तो उसका जो करंट जाएगा तो V इज इक्वल टू IR. I हमारे पास आ गया है 3/2000 और रेजिस्टेंस है हमारे पास 2000. तो आंसर आ गया है 3 वोल्ट. सो आंसर इज ऑप्शन बी 3 वोल्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. The frequency of AC in some countries is 60 Hz. What does this mean? The answer is option B. The current changes direction 120 times in a second. Question 15. Raman wants to draw a graph to show how the resistivity of a wire changes with the length of the wire. What should his graph look? So the answer is option D. इसे बताइए कि resistivity only depends upon the temperature and not on length and area of cross section. So answer is D. Which circuit shows the correct and safe position for the fuse and the switch? It is option A. Now comes the assertion reasoning part. Question number 17. Assertion: a whitewashed wall develops a coating of calcium carbonate after a few days. Reason: calcium oxide on the wall reacts slowly with carbon dioxide in the air. So the answer is option C. Assertion is true but R is false, because calcium oxide and calcium hydroxide on the wall react slowly
with carbon dioxide in the air. Question number 18. Assertion offspring produces by sexual reproduction shows variation. ये true है. Reason each offspring produced by sexual reproduction inherits all the genes from each parent. तो ये false है. So again, option C, E is true but R is false. Question number 19. Assertion capillaries have walls that are just one cell thick. तो ये true है. Reason exchange of material between the blood and surrounding cell takes place across the capillaries. ये भी true है. But reason assertion के लिए correct explanation नहीं है, तो ये option B होगा. और 20th क्वेश्चन का assertion है stationary charged particle with magnetic field experience a force. True. Reason a stationary charged particle does not produce a magnetic field. ये false है, तो again it's option C. E is true but R is false. तो चलते अब सेक्शन B में. The very short answers question of 2 markers यहाँ पे है. Question number 21-26 का 2 markers के हैं. तो first part है Diana prepared a cake by 2 methods. Method 1, she added baking soda to the cake mixture and let the mixture stand for 1 hour before placing it in the oven to bake. Method 2, she added baking powder to the cake mixture and let the mixture stand for 1 hour before. Okay, so question number 21 में the first part है. So उसका question है state the difference in the cake mixtures that Diana is likely to have observed before baking. Explain why. तो मेथड 1 में से बेकिंग सोडा ऐड किया था. बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो जब वो हीट होता है तो वो Na2CO3 रिलीज करता है जिससे केक बेटर हो जाता है. लेकिन बेक करने से पहले उसमें कोई चेंज नहीं होता क्योंकि वो CO2 रिलीज़ नहीं करता बेकिंग होने से पहले. मेथड 2 में बेकिंग पाउडर जो होता है वो NaCO3 प्लस सोडियम सॉल्ट टार्टरिक एसिड ऐड करते हैं जिसकी वजह से CO2 होता है और वो जो केक का जो डफ होता है वो फ्लपी हो जाता है. तो ये होता है वो उसका डिफरेंस. तो उसका जो सेकेंड पार्ट है और में वो है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूट्रल सोडियम एटम एंड ए पॉजिटिव सोडियम आयोन. जस्टिफाई योर आंसर्स. ओके, तो एक न्यूट्रल जो सोडियम एटम होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 8 1. तो जब वो इलेक्ट्रॉन दे देता है अपना तो वो हो जाता है Na प्लस पॉजिटिव आयन से कैटायन बोलते हैं हम. तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,8. तो इसमें देख सकते हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. तो ये ज़्यादा स्टेबल रहता है दैन दिस. ओके, तो ये होता है इसका डिफरेंस. So moving forward to next question, question number 22. How do control coordination plant differ from that animal? Give any 4 points of difference. तो प्लांट में सिर्फ केमिकल हार्मोन्स होते हैं जबकि एनिमल्स में केमिकल हार्मोन्स प्लस न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है. प्लांट में जो केमिकल हार्मोन्स सिक्रेशन होता है वो कोई ग्लैंड नहीं करता लेकिन एनिमल्स में वो एक ग्लैंड करता है. स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं सिक्रेशन फॉर हार्मोन्स. थर्ड पॉइंट, प्लांट्स कभी भी वो अपने स्टिमुलस से अपने आप को बचा नहीं सकते लेकिन एनिमल्स दे कैन से देमसेल्फ ऑफ स्टिमुलस बाय थ्रू रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन. फोर्थ पॉइंट, उनका जो उनकी जो प्रोसेसेस होते हैं वो स्लो होते हैं जबकि ह्यूमन और एनिमल्स में जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है वो इज़ ऑलमोस्ट अ वेरी मच फास्टर दैन दैट इन प्लांट्स. Question number 23. A person suffering from liver disease is advised to avoid fatty and highly acidic foods. Give a reason why each of the food mentioned should be avoided by a person suffering from liver disease. तो हमें पता है कि लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है जिससे फैट्स इमल्सीफाई होते हैं. तो जब इन एब्सेंस सॉरी लिवर का सिक्रेशन अगर बंद हो जाएगा तो फैटी और हाईली एसिडिक फूड्स को वो इमल्सीफाई और डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. इसलिए a person suffering from liver disease should avoid fatty and highly acidic. Question number 24. Oxygen mostly is carried by a pigment in our blood, whereas carbon dioxide is transported in dissolved form in our blood. You have 2 reasons that make the above statement correct. हमें पता है the pigment जो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है
ट्रांसपोर्ट करता है वो है हेमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड में डिजॉल्व है वो है प्लाज्मा। इसके रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट सोल्यूबल इन लिक्विड्स एंड ऑक्सीजन। सेकंड, जो हेमोग्लोबिन होता है वो एक उससे पिगमेंट, इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। Question 25. White light is passed through a prism to yield a spectrum. Option A. The ray of which color will show the maximum angle of deviation, which one will show the least angle of deviation? तो maximum angle deviation है violet and least angle deviation है red. Question number B. B part. A blue colored ray is passed through a glass prism. What will be the color of the emergent ray? Justify your answer. सो एमर्जेंट रे का कलर ब्लू ही होगा क्योंकि उसमें कोई और कंपोनेंट्स नहीं है वाइट लाइट की तरह, तो वो तो उसका डिस्पर्शन नहीं हो सकता। तो और में आता है मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज nearsightedness. A person with defect has a power for nearer than infinity. Draw a neat line and depict image correction for myopic eye using suitable lens. तो इसका डायग्राम एनसीईआरटी में अवेलेबल है, तो आप उससे देख सकते हो। Question number 26. Study the food wave shown below. Identify the right food chain from the food wave shown in which the eagle will receive the highest percentage of energy from the producer. So ये food chain है grass to mouse and then to eagle, क्योंकि इसमें इसलिए हमें पता है कि 10% लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये होता है कि जब हम प्रोड्यूसर से कुछ भी लेते हैं तो उसके भी 10% एनर्जी हमारे पास जाता है, तो जितना कम ट्रॉफिक लेवल होता है उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो सबसे कम ट्रॉफिक लेवल यहाँ पे है, तो इसलिए दिस विल बी द राइट फूड चेन। सो बी पार्ट की बात करें तो which organism will be most affected when a non-biodegradable pesticide is introduced in the soil? That is eagle. And what is the phenomenon responsible for this? Is called biomagnification. Observe the two chemical equations given below. Explain how balanced equation can be identified. A balanced equation can be identified when we find same number of atoms of each element both in LHS and RHS. तो फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि why is balanced equation important? Why is it important to balance an equation? It is because to follow the law of conservation of mass, which states that mass can neither be created nor be destroyed in a given chemical reaction. So B part की बात करते हैं, which of the two equation is not balanced? Balance the equation by rewriting. The equation not balanced is this one, the P part. So let's balance it. Sorry, technical problem. One minute. Yeah. So now the equation is balanced. So you can see that the reactant side of the LHS, there are two hydrogen, and here sorry, there are four hydrogen, and here also there are four hydrogens. और कैल्शियम भी एक है, यहाँ भी कैल्शियम एक है, यहाँ पे दो नाइट्रोजन है और यहाँ पे भी दो नाइट्रोजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 6 8, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 8 ऑक्सीजन है। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। मैं दोबारा लिख देती हूँ। तो HNO3 में हम 2 ऐड करेंगे और H2O में हम 2 ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो the thermite process is used for repairing cracks or radiate track on site.
Write the equation for the reaction taking place in the process. Mention the physical state of the reactants product. तो ये वही वाला है जो एल्यूमिनियम प्लस फेरस ऑक्साइड इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑफ फेरस, तो उसका आप रिएक्शन लिख सकते हो. उसके बाद बी पार्ट फॉर इन्फॉर्मेशन द केमिकल इक्वेशन इंडिकेट द रिएक्शन एक्सोथर्मिक. द information in the chemical equation that indicates reaction exothermic is production of heat. Question 29. Given below is a table representing the characteristic of two fluid involved in transportation of substance in human body. Fluid A, colorless, contains less oxygen, contains less protein. Fluid B, colored, contains more oxygen, contains more protein. Fluid A is lymph, fluid B is plasma. तो ये ऑप्शन ए का आंसर हो गया. Then B part. With the help of flow chart, describe the movement of fluid A from intracellular spaces to the main circulatory system. तो वो हो जाएगा, पहले टिश्यू से वो जाता है लिम्फेथेटिक कैपिलरीज में, लिम्फेथेटिक वेन्स में, एंड देन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम. क्वेश्चन नंबर सी. व्हाट रोल डज फ्लूइड ए प्ले इन डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन. सो जो फ्लूइड ए लिम्फ होता है वो डाइजेस्टेड फैट स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ब्लड में सर्कुलेट करता है. तो और पार्ट में क्वेश्चन है, उसका आंसर देखते हैं. टू मेजर फोर्सेस हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर in a plant. Force C is a driving force in movement of water during the day, whereas force B has movement of water in a plant during night or during the day, where humidity is very high. Identify force C and force B. Force C is a transpirational pull or suction pull, and force B is that when जो xylem होता है जब वो रूट से एक्टिवली वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाता है, दैट्स द फोर्स बी. बी पार्ट डिस्क्राइब हाउ ईच ऑफ दिस फोर्स द मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ प्लांट. तो जो फोर्स ये होता है वो सक्शन पुल करवाता है ताकि वाटर ऊपर जाए, और जो फोर्स बी है वो वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू. कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.